Assalamu alaikum everyone, and welcome to the online session hosted by Sindh Educational Organization. I am Mohammad Awais Toheed and I am General Secretary of Sindh Educational Organization, and I will be the hosting the session today. As you all know that SEO brings a different session on the different topics as it relates to scholarship opportunities or it's related to any social topic. So in the same way, we have bring another informative session for you guys, and that is all about technology, skills, and advancement, the importance of technical education in the modern era. And in today's session, we have a guest speaker, Mr. Engineer Arif Hussain, who is a gold medalist from Sakhar IB University, who has done his BE and ME in electronic system design from Sakhar IB University. He has some past experience at Sakhar IB University, and now he is a deputy director, MO and lecturer at Benazir Bhutto Shahid University of Engineering Technology, Khairpur, Meerut. So now, without having any further delay, we'll be heading to our guest speaker. So over to you, Mr. Engineer Arif Hussain. Thank you very much. Am I audible to all of you? Yes, sir, you're audible. My voice is clear? Yes, sir, your voice is clear. You can go ahead. Thank you very much for inviting me for this wonderful session. So before delaying and taking more time, I would like to share a presentation of my talk. Is it visible on your screen? Yes, sir, the screen is visible. Okay, thank you very much. So we are starting our session that is basically the technology, skills and advancement. So this is the modern era, and this is the time and the duration of technology. So how can we be updated with the technical education and modern era? How can we, what are the skills and the technology that is required for current technological trends and the market demands? So before starting our formal presentation, I would like to share two quotations. Number one is that technology empowers us to dream beyond the boundaries of what possible. Okay, and the second is that is morely entrusted in the importance of skills. So in the most important skill to acquire in age of technology is the skill of learning new skills. So comparing these two things, we can have that what are the current technological trends and how technology can impact us, and then how we can apply those technological skills to solve our technology problems. So before going into the depth, this is how our technology has evolved. Technology has evolved from old ages to this now the era of that we call it industry 4.0, जहां पर हम देखते हैं कि how technology, robotics, AI, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारे daily routine का part बनती जा रही है. Previously, this was not the conventionally. So there are two trends. As the technology is evolving, the second thing is that the skills are changing. The market demands is also changing. So currently, considering those two aspects, what we can do is to upgrade ourselves. This is basically the industrial revolution. There was a first industry 1.0, then industry 2.0, then industry 3.0, and currently we are in the industry 4.0, that is a smart factory automations. Initially we started from steam engines. हमारे पास steam engines होती थी जो trains वगैरह. Then we came to the mass production lines जहाँ पे electricity, bulbs, ये सारी चीजें हमारी evolve हुई. Then we came at the automated production industry, that is the industry 3.0. But now we are at in the era of industry 4.0. अब 4.0 में तो आ गए, तो 4.0 है क्या, इंडस्ट्री 4.0 है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके लिए हमारे पास कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे. तो इट इज ऑल अबाउट द स्मार्ट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल, देयर इज वन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट फैक्ट्री, ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग and machine learning, big data. This is all the current, because as we know that as technology will evolve, we have to change our skills and we have to change our mindset as well. So this is one of the example of industry 4.0. That is, it involves the robotics, it involves the cloud computing services, big data technologies, embedded system, smart storage, flexible intelligent system, wireless communication. These all systems will combine together and work in a systematic way to ultimately optimize the production of our system. Then we have the smart cities.
Now there is a concept of smart city. That is how smart cities should include the water quality, smart energy, gas energy systems, Internet of Things, traffic management, intelligent shopping. Apart from that, there are variety of aspects. So that will be included in the smart home or industry 4.0. So utilizing these things, how can we be updated with our current technology? Is we have the skills that are required to be updated in current technological trends. Now, considering this, look at the job era or landscape of jobs. As you know that now the emergence of automation is increasing day by day. We are using artificial intelligence, we are using robotics, we are using machine learning, big data, all these things. With this, what we have is advanced technology. उसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ही ऑटोमेशन इवॉल्व हुई है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई है. जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तो वी हैव स्पेशलाइज्ड मशीनरी, बिकॉज प्रीवियसली वी डोंट हैव रोबोटिक्स. हमारे पास रोबोट्स नहीं होते थे इंडस्ट्रीज में. वी यूज सम लेबर्स, हमारे पास जो लेबर्स होते थे वो काम करते थे. बट अब अगर हम देखें थोड़ा सा, तो जैसे इवन इन पाकिस्तान आई हैव सीन द रोबोट्स इन SIUT hospital sector as well as the games hospital. They have introduced the surgical robots. So you can think of this कि अगर इन चीजों को हम यूज करेंगे तो क्या हमारे जो करंट स्किल्स हैं या जो हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, क्या वो हमारे पास 10 से 12 साल तक हम उससे सर्वाइव कर सकते हैं? इफ नॉट, देन वी हैव टू अपग्रेड अवर सेल्फ. अब इन तीनों की वजह से क्या होगा, हमारे पास न्यू रोल्स एंड न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे. जैसे ही न्यू रोल्स और न्यू जॉब्स आएंगी तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हमारे पास न्यू जॉब्स चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप आज से 5 से 10 साल पहले चले जाएं तो देयर वाज वन जॉब ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर और वी कैन से द टेलीफोन ऑपरेटर. आजकल वो जॉब नहीं है, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी तो हमारे पास जो रोल्स हैं या जॉब्स है वो भी चेंज होगी. रोल्स और जॉब्स चेंज होगी तो हमारे पास जो स्किल सेट है उसको भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा. सो इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे जैसे हम ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. अब प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होती है तो उससे हमें क्या मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली इंटरेस्टेड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. अब देखिए उसके बाद, अब ये सारी चीजें समझ में आने के बाद हम सोचें कि टेक्निकल एजुकेशन है क्या, है ना, बिकॉज वी हैव लर्न अबाउट द एजुकेशन इज लर्निंग समथिंग, बट व्हाट अबाउट द टेक्निकल एजुकेशन? इसका क्या एक डिफरेंस है जो कि कन्वेंशनल एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन से डिफरेंशिएट करता है? तो एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन इज बेसिकली इट मेनली फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट knowledge and skills in a specific field of study, because technical education is not only the education that you need to theoretically study. You are mainly interested in the practical knowledge and the skills required to solve a certain problem. It is all about the learning hands on skills and the specialized knowledge. For example, अगर आपका मोबाइल में कोई फॉल्ट आता है या आपके लैपटॉप में कोई डिफिशिएंसी आती है तो यू विल गो फॉर अ स्पेशलाइज्ड पर्सन. वो जो लैपटॉप का स्पेशलिस्ट होगा वही आपको सॉल्व करके देगा. यू कैन नॉट गो फॉर द मैकेनिक का अपना एक जो होगा स्पेशलाइज्ड स्किल सेट होगा. जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन होगा उसका एक अपना स्किल सेट होगा. द मेन पर्पस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्या है? उसका मेन पर्पस यही है कि वी नीड टू प्रिपेयर द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड दस एनहांसिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी. अब देखिए हमारे पास इंडस्ट्री इवॉल्व होगी, इंडस्ट्री में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई. फॉर एग्जांपल रोबोट्स आ गए. लेट्स से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका SIUT सखर का या गेम्स गंबट का हॉस्पिटल का. अब उन्होंने रोबोटिक सर्जरी तो ले ली, रोबोट्स भी आ गए, सारा कुछ आ गया, बट उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास क्या स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं? अगर वो नहीं है तो हमारे पास ये प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है. देन टेक्निकल एजुकेशन का जो मेन फोकस होता है वो होता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे. फॉर एग्जांपल आपके पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको जस्ट थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना, आप उनको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है. देन इट प्रोवाइड्स द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग. आप देखिए टेक्निकल एजुकेशन में आप क्या सीखते हैं? टेक्निकल एजुकेशन में नंबर 1 यू विल हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट टूल्स. फॉर एग्जांपल एक सिविल इंजीनियर होगा तो वो सिविल इंजीनियरिंग के कौन कौन से टूल्स हैं जो कि उसको आने चाहिए. इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है,
या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी हैं, उनको बेसिक टूल्स जो हैं वो आने चाहिए। उसके अलावा देयर आर सर्टेन इक्विपमेंट्स। फॉर एग्जांपल, आप लोग अगर डॉक्टर्स के पास चले जाएं, डॉक्टर्स मेडिकल डायग्नोस्टिक्स करते हैं। अब मेडिकल डायग्नोस्टिक्स कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट। एमआरआई हो गया, हमारे पास इको हो गए, हमारे पास एक्सरे मशीन्स। अब ये क्या, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। जब तक इनको आप यूज नहीं कर सकते, इनको ऑपरेट नहीं कर सकते, इनकी पैरामीटर्स नहीं जानते, यू कैन नॉट यूज देम। सेकेंडली, मटीरियल्स, देयर आर वैरायटी ऑफ मटीरियल्स, आपको वो भी सीखने चाहिए। तो अल्टीमेटली ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा स्किल्ड वर्कफोर्स कंट्रीब्यूटिंग इन द इंडस्ट्री एंड सक्सेस। अब थोड़े से मैंने कुछ एग्जांपल्स इसमें ना इनकॉर्पोरेट किए। यू ऑल नो अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आप सब लोग जानते हैं। कन्वेंशनली सिविल इंजीनियरिंग जब हम सुनते हैं तो उसका नाम ये आता है कि भाई रोड्स या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। बट ये प्रीवियसली होता था, अब ये नहीं है। अब यहाँ पर नई फील्ड्स आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ देम इज द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अब ये क्या है? अब यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख सकते हैं कि डिफरेंट 3D बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब ये 3D मॉडल से before going to actual मॉडलिंग और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, वी प्रिपेयर द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। उसमें क्या होगा कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होगी कि भाई हमारी ये बिल्डिंग है, इसमें कितने फ्लोर्स होंगे, कितने डोर्स हैं, कितनी विंडोज हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी स्पेसेस हैं। यू नीड ऑल इंफॉर्मेशन। सेकेंडली, इसमें एक और आ गया स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल हमारे सारी जो डिवाइसेस हैं या सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रोड्स, ब्रिजेस, उनमें सेंसर्स इनकॉर्पोरेट हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं? उनकी बेसिस पे देखें, ये प्रीवियसली बीआईएम मैनेजर की कोई जॉब नहीं होती थी। आजकल यू कैन सर्च देता, बीआईएम मैनेजर की जॉब एग्जिस्ट करती है। अच्छा, ये वो जॉब है। ये सिविल इंजीनियर जरूरी नहीं है कि सिविल इंजीनियर, अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना आते हैं, आपको 3D मॉडलिंग आती है, आपको केड सॉफ्टवेयर पे काफी अच्छी ग्रिप है, यू कैन गो फॉर इट। जरूरी नहीं है कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो। इसी तरीके से इंटेलिजेंट सिस्टम, सस्टेनेबल डिजाइन, आजकल ग्रीन जो है ना कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस ज्यादा इनकॉर्पोरेट हो रही है। इसी तरीके से अगर आप देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रीवियसली आप देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता था कि बड़ी बड़ी एक मशीन्स जो प्रिपेयर करेंगे, या उसमें क्या होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रीवियसली हमारे पास ये होता था कि मैकेनिकल एक्शंस को हम देखते थे। पर आजकल वो नहीं है। आजकल देखेंगे वहां पर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स आ गई है, लेजर कटिंग आ गई है, सीएनसी मशीन्स आ गई है। ये वो इंजीनियर्स डायरेक्टली, जैसे आप कॉर्नर पे देख सकते हैं कि वन ऑफ दिस इज द 3D और एडिटिव प्रिंटिंग। उसके अलावा हमारे पास रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, जो भी आपके पास प्रोडक्शन लाइंस आ गई हैं वो सारी ऑटोमेटेड है। इवन इन सखर में हमारे पास वो है ल्यू कॉन्टिनेंटल बिस्किट, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन में एक रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या है? इट इज हायर एफिशिएंट एंड मोर प्रिसाइज। उसके अलावा बायोमैकेनिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, आजकल ये सारी ना यूज हो रही हैं। कन्वेंशनली अगर हम देखें थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये आता है कि हम सिर्फ जो है ना जनरेशन एंड, प्रीवियसली ही होता था जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर फोकस होता था, एंड जनरेटर्स एंड मोटर्स पे। बट आजकल उससे ज्यादा काम हो गया। आजकल हम स्मार्ट ग्रिड्स की बात करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चार्जिंग, स्किल्ड फोर्सेस। उसके अलावा प्रिसिशन एंड कंट्रोल। अब ये क्या है? देखें इससे क्या हो रहा है, क्या ऑटोमेटिकली हमारी फील्ड्स जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं। जैसे जैसे फील्ड इवॉल्व होगी तो हमारे स्किल सेट जो हैं वो भी चेंज होंगे। अब स्किल सेट चेंज हो रहे हैं। प्रीवियसली फॉर एग्जांपल ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए जो हमारे पास इंजीनियर्स हैं उनकी रिक्वायर्ड कोई जरूरत ही नहीं थी, बट अब हमें वो रिक्वायर्ड है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हम देखें कि वी हैव कंट्रोल सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन। अब एवरी इंडस्ट्री इज बीइंग ऑटोमेटेड बिकॉज इट इज नाउ टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी हैव कंट्रोलर्स, पीएलसीज। अब इंटेलिजेंट कंट्रोल एल्गोरिथम्स आ गए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली यू नीड टू डिजाइन अ सर्टेन प्रॉब्लम। आपके पास एक सिस्टम हो जो कि कंटिन्यूसली सेम एक्शंस परफॉर्म करे, एंड यू नीड टू जस्ट ऑपरेट इट विया सर्टेन कंप्यूटर। आप 10 लोगों का काम आपकी एक मशीन करेगी। यू जस्ट नीड टू हैव यू नीड टू सिट ऑन द कंप्यूटर एंड ऑपरेट दैट मशीन। इसी तरीके से अगर आप आए इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आजकल बहुत एडवांसमेंट आ गई है। करंटली, प्रीवियसली इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते थे? रेडियो, आपकी मोबाइल फोन्स। आप देखें मोबाइल फोन आप कंसीडर करें तो प्रीवियसली हमारे पास मोबाइल फोन्स की साइज बड़ी होती थी एंड देयर कैपेसिटी नाउ वाज लेस। आजकल क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली हमारा, फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास एग्जांपल है कि भाई हमने
जो बैटरी की साइज है उसको रिड्यूस करना है, वी नीड टू रिड्यूस दैट, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज टू इंक्रीज द कैपेसिटी। अब ये प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? आप आजकल डिवाइस की तो साइज रिड्यूस होती जा रही है बट उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो इसी वजह से उसके अलावा कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कॉम्प्लेक्स माइक्रोचिप्स। ये बुराक is one of the first microprocessor that is designed by पाकिस्तानी कंपनी, ये पाकिस्तानी कंपनीज ने डिजाइन किया। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको एवरी मेडिकल फील्ड जो होगी वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी, बिकॉज कोई भी आपको डेटा लेनी है आपको वहां पर सेंसर्स यूज करने पड़ेंगे, यू नीड टू यूज द सेंसर्स, आपको वहां पे सेंसर्स यूज होंगे, आपकी वैरायटी ऑफ एक्शंस यूज होंगे, ऑल दीज थिंग यू नीड टू डू इट। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है टेक्निकल एजुकेशन की? अब ये सारे हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस किया, सारी चीजें थी, वी वर टॉकिंग अबाउट कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई, तो उसके बाद स्किल्स कैसे इंक्रीज हुए, स्किल्स के बाद अब इनके इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जब तक आप टेक्निकल एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन पे नहीं जाएंगे, यू कैन नॉट गो इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इट विल हेल्प अस इन द empowering individuals to develop and apply cutting edge technology, contributing to the advancements in various fields such as हमारे पास जैसे हेल्थ केयर है, इंजीनियरिंग एंड मोर। इंडस्ट्री डिमांड्स, आजकल देखें इंडस्ट्री की डिमांड्स इंक्रीज होती जा रही हैं, इंडस्ट्री को हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है। अब वो वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है तो उसकी बेसिस पे हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? हमें हाईली स्किल्ड जो है पीपल रिक्वायर्ड होंगे। अब जब तक टेक्निकल, वो स्किल्स कहां से आएंगे? वो स्किल्स हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन के साथ आएंगे। सेकेंडली, इकोनॉमिक ग्रोथ। अवर इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेक्निकल एजुकेशन, बिकॉज जितनी आपके पास टेक्निकल एजुकेशन होगी यू विल हैव मोर टेक्निकल एस्पेक्ट्स। उसके अलावा एड्रेसिंग द स्किल शॉर्टेजेस। आपको पता है कि आजकल बाहर पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है ब्रेन ड्रेन, उसमें ये कि या स्किल्ड वीजाज होते हैं बाहर के लिए, आप कहीं पे भी जाएं, इवन यूरोप में आप चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, जापान चले जाएं, देयर इज ऑलवेज सेपरेट वीजा कोटा फॉर स्किल्ड वर्कर्स। अब वो लोग होते हैं जिनको टेक्निकली एडवांस होते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर इन हेल्थ केयर, डॉक्टर्स या नर्सेज, उनके लिए सेपरेट वीजा होते हैं, इंजीनियर्स एंड आईटी प्रोफेशनल्स, बिकॉज एवरीबडी नीड दीज पीपल। उसके बाद क्या है हमारे पास? जो एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज टेक्निकल एजुकेशन होगी। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं, या इवन जो है ना हमारे कलीग्स, उन्होंने जॉब्स या अदर चीजों पे फोकस नहीं किया, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन कंपनीज। उन्होंने अपनी कंपनीज, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने सोलर की कंपनी स्टार्ट की, कुछ लोगों ने डेवलपमेंट्स की कंपनी स्टार्ट की। तो उससे क्या है कि ऑटोमेटिकली दे आर जनरेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड डेवलपिंग इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। उसके अलावा क्या है? एडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखें प्रीवियसली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। जब तक अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व नहीं होंगे, तो वी कैन नॉट बी स्टे अहेडेड इन दिस डोमेन। अगर हम उस पर नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अब ये सवाल ये है कि टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की सारी तो मैंने बातें की, सो मेनी अपोलॉजीज for all of you for just this inconvenience. So we will begin again with the importance of technical education, because we started with what is technical education, how technology has evolved, its impact on the technology, how technology is being impacting us in and what are the skills. After that, we came back and we talked about the current technological trends, what are the skills that are being required currently, and what are the advantages of having technical education. So basically technical education is education that is mainly focused on the skills and technical knowledge that we need to apply to solve certain technical problems. Apart from this, we have technological advancements, industry demands, economic growth, addressing skill shortages, promoting entrepreneurship, and sorry, there was a network problem that made us to realize. I'm sharing again the screen. So we were talking about the importance of technical education. So that is mainly focused on the technological advancements, industry demands, economic growth,
addressing skill shortages, promoting entrepreneurship and lifelong learning. Because there are a variety of opportunities for technical education in the Pakistan as well as in the abroad. I specifically have seen lot of opportunities for technical people in Germany, Japan, and the Scandinavian countries such as and Finland, Norway, Denmark, all these countries, and Sweden. So there are lots of opportunities for technical education. So this is one more field in that that we can focus on. So currently, utilizing this platform, I would like to introduce. So, what are the potential opportunities for technical education in Pakistan, particularly in the Sindh? So, I belong. My is early introduced by the host. I have my education from Sakaraiwe University, and I'm currently associated with the Benazir Bhutto Shahid University of Technology and Skill Development. So, as you can see, that this is basically a technology university, and it also focuses on the skill development. This is one of the oldest university of not we can say the university, but organization or institute. It started in 1950 as a Sir Ali Murad Technical Institute. Then it became in 1962 it became a polytechnical institute in Kharpur, then Government College of Technology, then Polytechnic, and 2016 it became a full-fledged university. Its vision is basically is to lead global technological education and embed market-driven employable skill entrepreneurship skills to empower community. Our mission is basically simple, is to empower community with hands-on technological knowledge through high quality teaching, research environment, innovative tools and techniques, because ultimately you need to use certain tools and techniques. Because if you are interested in the technical education, you must know about what are the latest tools, techniques in every field, and global leadership skills. There are certain strategic goals. What are those strategic goals? Our ultimate purpose is to provide the technical education with practical, hands-on experience needed for national technological development. We need to promote the technology education and technopreneurship to contribute in national economy, because as we all know about the current economical situation of the country. Also, we need to promote the scientific, our aim is to promote the scientific research and to acquire the excellence in technology and contribute toward the socio-economic development by producing a skilled workforce. These all are the strategic goals. And now I will tell you how we can achieve these goals and how our university is contributing in achieving these goals, and what resources we have at the resources and opportunities we have at our university. So basically, there is one difference between engineering and engineering technology, because our university is technology university, not only the engineering. Because as you know that Mehran is an engineering university, Qaidamam is an engineering university, but this is a technical or technology university. So there is some difference between technological universities and engineering. Basically, engineering is more focused on mathematical problems. They are interested in the complex design, complex analysis, research. As myself, I'm an engineer. I know basically that we are always interested in the simulation modeling, and we are interested in the design and development of the solutions. While the technology spectrum is that they are mainly focused on the testing and evaluation. We need to find if there is a problem in equipment, who will solve it, who will identify. Engineer cannot identify what are the technical faults, but technologists can. Routine design, what are the current routine activities, production, all the production lines are looked after by the technologists. You will not find engineers in production lines. And the services, all the services including PTCL, WAPDA, and all this, basically they have the skilled people, and while the engineers just they manage and supervise all the execute all the technological programs. So again, it's how the technical job function is different in terms of engineering and engineering technology. The engineers are mainly interested in the research. They are mainly focused on the research, development, complex design, complex analysis, while the technologists are mainly focused on the manufacturing, production, operation services, and distribution and sales, product design. They are more practical oriented, while the technologists or engineers are more theoretical or design aspects. So at our university, these are our resources we have
foreign qualified faculty, technology, all these things, digital library, labs, smart classrooms, all the facilities that our university different. Currently, we are offering the various technology programs. So you can see the difference. This is not the engineering program, but it is an engineering technology program. So that is different from the engineering, and it is more focused in the technology. So it is accredited by National Technology Council. We are offering civil, mechanical, electrical, electronics, and computer. While there are other aspects, is the diplomas, that is in refrigeration, auto diesel, computer, and all these programs. These are various laboratories at our university. And also, how can we, as we start, claim that we are interested in promoting the scientific research? For scientific research, we organize various conferences, events, international collaborations. There are variety of international collaborations in China and other local and national sports activities, various activities that foster the technopreneurship, project exhibition, soft skill development. All these are the aspect that contribute into the development of various students. Apart from this, we have a variety of student exposure. For that, we send students. So this is one of the, I'm just sharing because I got opportunity. Most of the people are not are less aware about the technology programs. So our students are participating in variety of competitions, and they contribute into different societal segments. These are certain our alumni that are working. You can see that the most of them are in the technical fields. So you can get some good jobs and get some. They are working in trade. They are working in Pakistan Airlines, Novotex, Nepcon. These are variety of. They are also working in industries, purely in the industrial sectors. So this is how we can learn about the technological education. And I would like to conclude my presentation and with this quotation of Bill Nye, that there is nothing I believe in more strong than getting young people interested in science, engineering for better tomorrow and for better all humankind. So with this, the floor is open for the questions and suggestions. You are welcome to discuss. So, all right, that was a very wonderful session for the person related to technology and that particular fields. And I hope that this session will help the person related to that particular fields related to ITs and technology fields. So now we'll be having a question and answer session. So all the participants who have any other question, they may ask freely. Kindly raise your hand first, as I come to know that you have any question. And then our guest speaker is here. You can ask any question you want. So if you have any question, kindly raise your hand first. Any question related to technological education, current market demands, and the opportunities abroad, you are more than welcome to discuss. Yes, any question related to what our speaker has said and the topic, you may ask freely. So Ms. Shafak, you can go ahead and ask question. Welcome, sir. Waalaikum Salam, beta. Sir, my question is according to the technology as you have discussed so far. The problem Yes. is that कि आपने engineering technology की बात की, but then again it comes about the females. So आपकी university क्या female empowerment पे काम करी है? हालांकि we have a stereotype कि females में ज़्यादा engineering में नहीं आती और technology में भी नहीं आती. But this is something which is a dire need for today's era, और हमें इसके साथ adaptive again होना है. तो व्हाट आर योर सजेशंस ऑन दिस कि मतलब कैसे फीमेल्स को हम एम्पावर करें कि वो इस फील्ड में आए एंड दे गेट मोस्ट ऑफ इट. Actually, thank you very much, Shafak, for asking very valid question. Yes, हमारे पास अक्सर यही perception develop होता है कि engineering is always for the males or boys, but इस तरीके से नहीं है. We have different aspects for female education, because आजकल अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल थीम में भी स्टेम एजुकेशन, और वो मेनली फोकस्ड हैं आपके पास नॉट ओनली टू द बॉयज बट ऑन. आपने रिसेंटली देखा होगा हमारे पास एक चाइना ने चंद्रयान 3 अपनी एक मिशन लॉन्च की है. हैव यू सीन देयर द टीम, टेक्निकल टीम,
majority of their technical team is based on the females. हम हमारे पास ये है कि हमने ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ engineering is only for the boys. अब हमारी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है इसमें कंट्रीब्यूशन एंड ओवरऑल क्या हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है कि देयर अपार्ट फ्रॉम द specified quota there is some separate quota for the girls. So there is always priority for getting admissions in this university. Also variety of our girls are working. I can share some information or we can say to the video that you can see that how the girls are getting in majority of girls are working in the civil engineering. They are performing variety of experiments. I can show you because ultimate our purpose is not to just focus on that, as you already mentioned, that we have to evolve with the technology. For that we are focusing on their technical aspects as well as the personal growth. So using this we warmly welcome all the girls in our university. Any other question? Yes, any participant have any other question? You may ask freely. First, you raise your hand first, as I come to know that you have any question. Kindly ask quickly. Any other participant have any other question? They may ask freely. Otherwise, we will conclude our session here. So, no one has any question? So, all right. Thank you so much. There is no question. I can share my email or contact details. If anyone want to know more about or discuss further about the technological education, I've shared this slide with the team. They will share with you. If you can get certain information, I will be more than happy to share you. This is my contact details. You can reach me out on my email or my WhatsApp number. So with this, I'm really thankful to the team of Sindh Educational Organization for inviting me and having this session. All right. Thank you so much, sir, for your time and sharing the wonderful insights about this particular topic. So with this, we will conclude our session. Thank you so much, all the participants, for joining this session. So in coming days, we will come up with another session. Till then, Allah Hafiz. Allah Hafiz.